Hello students, today we are going to start new chapter number 9. Chapter number 9, financial market. Chapter 9, financial market. Now first of all, what is financial market? Financial market is not a proper location, means not a physical location. It is a process. Financial market is a process. That process is called financial market. Now what is process? Process means whenever cash inflow and outflow takes place between two individuals or between two institutions or between individual and institution, such cash inflow and outflow, this process, the process of cash inflow and outflow is called financial market. Means financial market is not a proper location, it is a system, it is a process. That process is called financial market, and that process means here process of cash inflow and outflow between two parties, between two individuals or between two institutions. Such cash inflow and outflow is called financial market. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें पैसा का आना और जाना दोनों लगा रहता है, एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक, तो बैंक इज द गिवर ऑफ मनी and we are the receiver of money, or in a technical words we can say cash outflow take place from bank and cash inflow take place to us. एक बैंक से पैसा जा रहा है और हमारे पास पैसा आ रहा है, तो जो इनफ्लो आउटफ्लो है मनी का, पैसे का फ्रॉम बिटवीन टू पार्टीज, सच इनफ्लो आउटफ्लो इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट. इट इज़ नॉट अ प्रॉपर लोकेशन. किसी प्रॉपर लोकेशन को हम नहीं बोलते कि ये फाइनेंशियल मार्केट है. जो सिस्टम है जिसमें पैसा आना जाना लगा रहता है, यहाँ से गया वहाँ चला गया, वहाँ से आया यहाँ चला गया, उस आने जाने के पैसे को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं. मीन्स प्रोसेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट. सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ मनी, system of flow of money is called financial market. But technically what is the definition of financial market? Before that, जो inflow outflow होता है फाइनेंशियल मार्केट में, पैसे का आना जाना होता है, that is in two parts. That financial market is divided into two parts. Organized financial market and unorganized financial market. First of all, I am explaining in short about the financial market, then we will touch textbook. Organized financial market and unorganized financial market. Now what is organized financial market and what is unorganized financial market? और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसके पहले वंस अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट. आप बार बार ऐसे सोचेंगे दैट इज अ प्रॉपर लोकेशन, अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वो फाइनेंशियल मार्केट है? नहीं, दैट इज रॉन्ग. फाइनेंशियल मार्केट मीन्स वंस अगेन process of cash inflow and cash outflow between the two parties, between the two institution, that process is called financial market. तो ये जो पैसे का आना जाना रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ये दो टाइप के होते हैं. ऑर्गेनाइज्ड, ये हिंदी में साथ साथ बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट वन, थोड़ा समझने में, टेक्निकल चीज़ आपको समझने में टाइम लगेगी, इसलिए साथ साथ हिंदी भी यूज़ कर रहे हैं. ये फाइनेंशियल पैसे का आना जाना दो पार्ट्स में डिवाइड है. मतलब इनफ्लो जो होता है, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड. नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड? इसमें इन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो टेक प्लेस
through a proper procedure, by fulfilling certain formalities, and such transactions means cash inflow and outflow are properly recorded in accounts, in books of accounts. ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट हम उसको बोलते हैं जिसमें पैसे का आना जाना एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में होता है, एक प्रोसीजर में होता है, साइंटिफिक प्रोसीजर में, या हम बोल सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, और उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैश इनफ्लो आउटफ्लो दे आर रिकॉर्डेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक, so he has to fulfill certain formalities, that person has to fulfill certain formalities, he has to accept all the procedures regarding loan, and after accepting the procedure, after fulfilling the procedure, then he can take loan from the bank, and when he is taking loan from bank, that is recorded, वो रिकॉर्ड में आ जाता है, बैंक रिकॉर्ड कर लेती है. such type of cash inflow and outflow is called organized financial market. Now what is unorganized financial market? Opposite of organized financial market. Means here cash inflow and outflow take place, but here certain specified formalities. In organized financial market जो पैसे का लेन देन होता है उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस, आरबीआई की, बैंक्स के अपने रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर खरीदना है, बेचना है, सो स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू fulfills the or follow the rules laid down by the central government, rules laid down by SEBI, rules laid down by Companies Act 2013. Various rules are to be followed before cash inflow and outflow take place. But in case of unorganized financial market, there is no system, means no procedure is required to be followed. इसमें ऐसे मार्केट में कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं चलता है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करने हेयर, एंड सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, प्रॉपरली नॉट रिकॉर्डेड. फॉर एग्जाम्पल इन रूरल एरिया द पुअर फार्मर, सपोज वन पुअर फार्मर हैज टेकन लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम अ बिग फार्मर, अ रिच फार्मर, और वी कैन से जमींदार. He has taken the loan of 20,000 from जमींदार. तो उसमें कोई सिस्टम नहीं है, अपने हिसाब से वो लोन देते हैं, अपने ब्याज दर अपने हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर फिक्सिंग. उसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, कोई प्रोसीजर नहीं होता है, मीन्स अनसिस्टमैटिक. कैश इनफ्लो आउटफ्लो टेक प्लेस, इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता नहीं है कि यहाँ से पैसा गया, यहाँ पैसा आया. तो देयर इज नो सिस्टमैटिक मैथड, there is no systematic procedure, there is no proper formalities are required to follow. Here cash inflow outflow take place between two parties, but these transactions are not recorded in the books of accounts of any government institution. कोई भी ऐसी संस्था जो लीगल वैलिड है वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, इस ट्रांजेक्शन का. कोई इसमें प्रॉपर अपनी इच्छा से वो ब्याज उधार देते हैं, वो लेते हैं, ब्याज दर कुछ भी तय कर लेते हैं, एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट. बट सिंस हेयर ऑल्सो कैश इनफ्लो आउटफ्लो टेक प्लेस, दैट्स वाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दैट प्रोसेस ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो between two parties, between two institution or party to institution is called financial market. That's why we are saying this unorganized systematic manner as a unorganized financial market. यहाँ भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, भले उसका रिकॉर्ड नहीं है, भले उसमें कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन जब पैसे का आना जाना होगा एक जगह से दूसरी जगह, हम उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलेंगे. इसलिए वी आर सेइंग फाइनेंशियल मार्केट, बट दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड. तो हेयर Indian financial structure is divided into two parts: organized financial market or organized financial structure, and unorganized financial market or unorganized financial structure. Now proper definition regarding financial market. Proper definition is
Now proper definition of financial market. Financial market is the organized, here we are talking about organized, is the organized financial structure, organized financial structure. Financial market is the organized financial structure which fulfills the long term as well as short term capital funds, short term financial. So financial market is the organized financial structure which fulfills the long term as well as short term financial needs of various or different parties. Parties here means that party may be individual or group of individual. For example, if business is sole proprietorship, it means individual. If business is of partnership nature, then group of individuals are taking loan, or inflow outflow take place between group of individuals, or if they are companies, then company, the different parties. So financial market is the organized financial structure which fulfills the long term as well as short term financial needs of different parties. And we all know that if we talk about Indian financial structure, is divided into two parts. First one is organized financial market, and second one is unorganized financial market. Now basically we have to understand about the organized financial market. अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो जो होता है वो सिस्टमैटिक प्रोसीजर के द्वारा नहीं होता है, इसमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो नहीं होती है, फॉर्मेलिटीज़ कोई भी पूरी नहीं करनी होती है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए, ये दो इंडिविजुअल के बीच में अपने हिसाब से वो तय करते हैं पैसे का लेना या पैसे का देना. दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट. इन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एक सिस्टमैटिक वे में कैश इनफ्लो आउटफ्लो टेक प्लेस होता है उसका बाय फुलफिलिंग द स्पेसिफाइड प्रोसीजर, बाय फुलफिलिंग द स्पेसिफाइड फॉर्मेलिटीज और फुलफिलिंग द गाइडलाइंस laid down by the central government or RBI or company or between the two parties, and such transactions are recorded. So here in this chapter we have to understand about the organized financial market. And what is the meaning of this definition? आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है. When cash inflow or outflow take place between two individuals or two parties or two institution or between individual and institution. इसका मतलब है one is borrowing money, other is lending money. एक किसी को पैसा दे रहे तो दूसरा ले रहे, एक उधार ले रहे तो एक उधार दे रहे. It means it fulfills financial market is the organized financial structure which fulfills the money requirement of different individuals or of different institutions और ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोगों की या ग्रुप इंडिविजुअल्स की ग्रुप हो उसकी या किसी संस्था की जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं.
and such requirements may be long term or short term, because we are talking about organized financial market. तो organized financial market में जो transactions होते हैं that are recorded in books of accounts, and from the accounting point of view we all know that liabilities means borrowings are of two types, long term and short term. Long term is called non current liabilities, short term is called current liabilities. We have done in accounts. So in financial market, transactions, cash transactions take place. Here cash transaction means inflow and outflow take place. As a result, what happens? It fulfills the money requirement. It fulfills the long term and short term money requirement among different individuals. That is the meaning of financial market. And in financial market, one important point, once again, Indian financial structure or financial market is divided into two parts. And if we talk about organized financial market, then what happens when transaction take place? When transaction take place, the total how many parties are involved in organized financial market? 3 parties are there, not 2. Important point regarding organized financial structure, 3 parties are involved. 3 parties are involved in organized financial market. These 3 parties are: 1, first one is issuer of securities. Issuer of securities means, for example, company is issuing shares, then company is considered as issuer of securities because they are issuing securities. Securities means share, debenture or any other bond, public deposit, for any other securities. So whenever company is issuing securities, it means they are issuer of securities. And issuer of securities means borrower of money. Borrower of money. अगर कोई कंपनी, after every sentence I am trying to explain all sentences in Hindi also because this is difficult chapter. You have to understand all the terms, technical words. Issuer of securities means company is issuing securities. That's why such companies are called issuer of securities. And issuer of securities means borrower of money. जो कंपनी शेयर इश्यू करती है, इसका मतलब क्या है? वो कंपनी पब्लिक से पैसा उधार मांग रही है. That's why such companies are called borrower of money. तो पैसा उनकी तरफ आ रहा है, means cash inflow. Second party is purchaser of securities. Purchaser or buyer. Buyer of securities. If company is selling securities, if company is issuing securities, this company, if companies are issuing securities, it means various individuals are there who will purchase those shares, and the person who purchase those shares or debentures or any other securities, they are called purchaser of securities. And purchaser of securities means they are giving money to the company, means they are lender of money. Lender of money. Lender means those who are giving money. Borrower of money, company is the borrower of money, and investors, shareholders, debenture holders, they are lender of money. They are giving money to the company. And third one is third party who involved in between the company and the investors. Investors, they are called intermediaries, like stock exchange, like share broker, like underwriter, like bankers. These are all intermediaries. So third party is intermediaries. For example, in simple language, if a person is selling his flat, it means generally we know that 2 parties are there. One is seller and one is buyer. The person who is selling his flat, they are called seller. The person who is purchasing the flat, they are called buyers. But in between these 2 parties, one more party is involved. His business also grows because of these 2 parties, seller and buyer. They are called intermediaries, brokers.
So when shares, debentures or any type of securities are issued by the company for the investors, in between company and investors various intermediaries grows, their business also develops. These intermediaries, the third parties are called intermediaries or middleman between the company and the investor. So total three parties are involved. Intermediaries like stock exchange, like stock exchange. What is the function of stock exchange? What is the duties, responsibilities of stock exchange? They are purchasing the shares of the company, and after that they are selling those shares to the different investors. So intermediaries like stock exchange, share broker, sub brokers, underwriters, bankers. These are all different parties involved in financial market. So first meaning I had told you. Then two types of financial market is there: organized, and this is about structure, not market, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. हमारे भारत के अंदर किस तरह की व्यवस्था है पैसे के आने जाने का? तो दो तरह की व्यवस्था है. एक प्रॉपर है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें ट्रांजेक्शन्स का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है. अनऑर्गेनाइज्ड, जिसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है और सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है. जैसे अगर शेयर इश्यू करें, वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी डन इन एसपीसीसी दैट व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज, व्हाट टाइप ऑफ रूल्स they need to follow before taking money, before borrowing money. They need to follow the guidelines of SEBI, they need to follow the rules, provision of Companies Act 2013, they need to follow the rules or guidelines established by central government, they need to follow the rules and guidelines established by Reserve Bank of India. So various rules they are required to follow. Means cash inflow outflow take place in a systematic manner, then it is called organized financial market. And unorganized financial market or structure, these are the two types of Indian financial structure. And in organized financial market, total three parties are involved: issuer of securities, purchaser of securities, and third one is intermediaries. Issuer of securities means a company, means they are borrowing money, cash inflow. Purchaser of securities means buyer, those who are purchasing shares, debentures, and they are giving money to the company, means lender of money, means cash outflow. And third one is intermediaries like stock exchange, share broker, underwriter, banker. They are intermediaries, they are middleman between the company and the investors, and when they are dealing such securities they are getting commission. So cash inflow out of पैसे का आना जाना हो रहा है, that is called organized financial market. So whole chapter is based on organized financial market. Now organized financial market is of two types. Organized financial, Indian financial structure is of two types: organized, unorganized. Now we are talking about organized financial market. Next topic is, new topic is organized financial market. Now financial market, when we are saying financial market, it means that is organized financial market. So organized financial market is divided into two parts:
one is capital market, other is money market. First one is capital market and other is money market. Capital market, money market. And capital market is also of two types: primary market and secondary market. Once again, don't give any confusion. When we are talking about financial structure of India, then financial structure is divided into two parts: financial organized financial market and unorganized financial market. Organized financial market, where proper systematic process is adopted for cash inflow and outflow, that is called organized financial market. Unorganized financial market means where a specified procedure or formalities are not to be followed, not required to be followed for regarding cash inflow and outflow, and transactions in case of unorganized financial markets are not recorded. When we talk about financial market means organized financial market, then whole organized financial market is divided into two parts: capital market and money market. Now what is the meaning of financial market? Once again, which fulfills long term and short term capital requirement of business enterprise. Once again, financial market means organized financial market. When we are saying financial market means again organized. So organized financial market means which fulfills long term as well as short term financial requirement of business institution. हम फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है जो जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं, जितने वेदर इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट. सो हेयर होल फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट इज रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म फंड्स. इन सिंपल वर्ड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स. जब हम लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन या बैंक से पैसा लेते हैं. जैसे कंपनी है, इफ यू टॉक अबाउट कंपनी इज इशूइंग शेयर, तो इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं या बैंक से वो पैसा ले रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. एंड व्हेन दे आर रेजिंग फंड्स, व्हेन दे आर मैनेजिंग मनी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, देन इट इज कॉल्ड मनी मार्केट. बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड. When they are raising funds for short time period, then it is called money market. When they are raising funds for long term period, then it is called capital market. When they are issuing issuing securities for long term, they are raising funds for long term. That long term fund is divided into two parts: primary market, secondary market. जनरली आपको ध्यान में रखना है सिक्योरिटीज मतलब शेयर. कैपिटल मार्केट में ज़्यादातर पैसे का लेन देन किससे होता है? शेयर से, डिबेंचर से. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस यूनिट्स. तो बिजनेस यूनिट ज़्यादातर लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ से अरेंज करती है? बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग डिबेंचर्स. दैट्स व्हाई कैपिटल मार्केट इज रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म फंड्स. और एंड कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में आते हैं कंपनीज जो शेयर इशू करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, मीडिएटर्स, इंटरमीडियरीज, जो बीच में अपना रोल प्ले करते हैं कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में. दैट इज स्टॉक एक्सचेंज. तो सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट इज कंपनी. अभी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. एंड मनी मार्केट हैज नो टाइप्स. मनी मार्केट है, एंड हेयर बिजनेस यूनिट्स आर रेजिंग फंड्स अगेन फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड. जब थोड़े समय के लिए हम पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो जो है थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है, तो उस मार्केट को हम मनी मार्केट बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम मनी मार्केट बोलते हैं. जब पैसे का लेन देन, इनफ्लो आउटफ्लो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. और एडिशन ऑफ दीज टू इज फाइनेंशियल मार्केट. कैपिटल मार्केट में दो टाइप होते हैं: प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट मीन्स इंटरमीडियरीज. प्राइमरी मार्केट मीन्स कंपनी जो पैसे ले रही है, अरेंज कर रही है अपने लिए बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. इसके बारे में हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू डिस्कस. नाउ एनी डाउट यू कैन आस्क.